order to understand the poem, we need to understand the poet. तो जब तक poet के बारे में नहीं पता चलेगा ना, तो it is going to be difficult to understand the meaning of the poem itself. So Adrienne Rich is from USA, was from USA, and she has written about 20 volumes of poetry. और साथ में देखो, she has been called a feminist and a radical poet. तो ये दो keywords हैं, that she has been called a feminist and a radical poet. देखो, feminist is जो feminist होते हैं, तो it can be either a man or woman. तो जरूरी नहीं है feminist हैं तो वो women ही होंगी. तो we'll call it a person. So a person who fights for women's rights, तो उनको कहेंगे feminist कहते हैं. तो feminist भी अलग-अलग टाइप के होते हैं. आपका socialist feminist होते हैं, liberal feminist होते हैं, radical feminist होते हैं. तो feminist हैं, that means they Adrienne Rich is fighting for, or at least she is advocating for women's rights. तो women के against जो भी discrimination होता है, तो she is arguing against that discrimination, and she is saying that मतलब through her poetry she argued for greater rights for women. और साथ में radical poet, अगर कोई radical उसको कहते हैं who has drastic ideas about society, मतलब who wants to change the society in a drastic way, कि जो अभी है उससे काफी अलग society वो envisage करते हैं और about the changes that they want to see in the society. So with this background that Adrienne Rich is a feminist and a radical poet, तो एक बार अभी पहले पढ़ के देखते हैं कि what does this poem talks about. ये तो ले जाओ. So can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? So this is a basic transcript before the beginning of the poem. So the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The sun that was empty all these nights will be full of trees by the morning. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bogs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the cleaning doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So this was the poem. Now I am 100% sure कि most of you would not have understood the poem. ये काफी typical सी poem है. और देखो, कोई भी अभी जैसे बड़े हो रहे हो आप लोग, तो कोई भी मैटर आप रीड करते हो ना, कुछ भी पोएम है या कोई ऐसे है, तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग. तो अभी जैसे पोएम को एक आप सिर्फ ओवरव्यू अगर देख रहे हो, एक बार पढ़ रहे हो, तो शायद कुछ एक पर्सपेक्टिव आपको नजर आए. उसको लिटरली पढ़ोगे, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे, तो दैट इज द सेकंड लेयर. एक तो ओवरव्यू पढ़ रहे हो कि एक बार ग्लांस लिया आपने, तो एक बेसिक इमेज सामने आती है. जब लिटरली पढ़ोगे
तो वो थोड़ी जो इमेज है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जो थर्ड लेयर आपकी है, जो हिडन मीनिंग है, तो वो जानना जरूरी होता है। एंड नॉट मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड द पोएम्स। तो पोएम, कोई भी पोएम लिखता है या ऐसे लिखता है, कोई भी राइटर अगर लिखता है, तो द राइटर वांट्स टू कन्वे अ पर्टिकुलर मैसेज टू द ऑडियंस। तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या मैसेज जो हमारा राइटर है एड्रियन रिच, वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है टू इट्स ऑडियंस। तो पहले लिटरल मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में एक और बार हम पढ़ेंगे इसको, तब हिडन मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे इसमें। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. तो जो राइटर है इनकी पोएम की, तो वो क्या कह रही हैं कि द ट्रीज आर इनसाइड। तो पॉसिबली जो ट्रीज हैं वो कहीं और हैं, दे आर नॉट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज एम्प्टी। तो आइडियली क्या होता है, फॉरेस्ट इज फुल ऑफ ट्रीज, लेकिन ये क्या कह रही है कि द ट्रीज आर इनसाइड, द ट्रीज इनसाइड आर नाउ मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट till now all these days the forest was empty, मतलब forest was without its trees। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि फॉरेस्ट में ट्रीज ही ना हो। तो इस प्रोसेस को तो हम डिफॉरेस्टेशन कहा करते थे, कि मतलब दैट इज नॉट अ फॉरेस्ट एट ऑल, कि अगर फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है तो वो तो फॉरेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन द फॉरेस्ट व्हिच द राइटर इज डिस्क्राइबिंग, it did not have any trees all these days it was empty, where no bird could sit, no insect hide. So such a forest, obviously अगर trees ही नहीं होंगे तो no bird can sit because there are no trees to sit on, no insect can hide। जो भी insects हैं, जो भी biodiversity है, it exists in symbiosis with the forest। तो हर कोई जो living organism है in a forest, it is dependent on each other। So trees are dependent on the, let's say, insects and birds for pollination. Insects are in turn dependent on the trees, birds are also dependent on the trees and insects। तो interdependence है। लेकिन अब trees नहीं है तो no bird could sit in such a forest, no insect could hide, no sun bury its feet in shadow। तो ये थोड़ा सा allegorical, मतलब थोड़ा सा इसमें इट इज टू पोएटिक अ लाइन, क्योंकि इसमें क्या मेंशन किया है, नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। तो अभी ये तो हमें पता है कि सन की फीट नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप इमेजिन कर सकते हो, ट्राई टू इमेजिन, अगर आंख खोल के इमेजिन करने में मुश्किल है तो ट्राई टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट में आप खड़े हो एंड वो इट इज डे टाइम, तो सन सीधा का सीधा नहीं आ सकता है, सनलाइट सारी सारी नहीं आएगी, इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय द ट्रीज। तो कुछ सम पार्ट ऑफ द सन इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय द ट्रीज। तो वो डिस्क्राइब करने के लिए कहा है कि नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो, कि जिस तरीके से, मतलब उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है जो सन ब्लॉक हो जाता है ट्री से, कि दैट इट इज सिमिलर टू सन बेरिंग इट्स फीट इन शैडो, मतलब सन की जो फीट है वो शैडो में दब जाते हैं। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। So something is happening tonight, the trees are moving out into the forest and the forest is now going to be repopulated, it is going to have all these trees by the morning। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। अभी क्या है, you need to imagine again, imagination का काम काफी है इसमें। घर के अंदर सुनसान घर है, खंडर वगैरह तो देखे होंगे आप लोगों ने, तो इमेजिन
a house in which a tree has grown, अगर कुछ भी खंडर होगा तो वहां पर अपने आप ट्रीज उग जाते हैं, कुछ भी प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं, इवन ऑन द फ्लोर। और कुछ भी अगर क्रैक्स वगैरह होंगे फ्लोर पर, हाँ, तो दे ग्रिप दोज क्रैक्स, उसके अंदर फंस जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ऐसा सिचुएशन है, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. So in the veranda floor जो भी cracks में roots फंसी हुई हैं, they have engaged themselves to get hold of the ground. तो अब उस को disengage करने की कोशिश कर रही हैं roots. So the tree is trying to move out. So for that it has to disengage its roots. So it is being prepared to move out into the forest. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. So the leaves, अभी पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है and it is inside the house. तो if it keeps on growing, कि अगर बड़ा होता जाएगा and the house cannot hold it now, इतना बड़ा हो गया है कि वो समा नहीं रहा है उसके अंदर, तो अगर विंडो है तो विंडो के सामने भी जो लीव्स होंगी वो अड़ जाएंगी। तो द लीव्स आर स्ट्रेनिंग टुवर्ड्स, दैट मींस द लीव्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द ग्लास। तो घर के अंदर ग्लास वॉल्स, वो ग्लास विंडोज होंगी, तो उसके अगेंस्ट द लीव्स आर स्ट्रेनिंग टुवर्ड्स द ग्लास। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, तो लीव्स के साथ में छोटी डंडियां भी होती हैं, छोटी स्टेम्स भी होती हैं, तो अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम यू कैन कॉल इट अ ट्विग। तो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, दैट मींस दैट द स्मॉल ट्विग्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द विंडो। लॉन्ग क्रैम्प्ड bogs shuffling under the roof. तो bog is basically the and you can say a bush of a tree. तो अगर एक पूरा स्टेम आप ले लेते हो, एक ब्रांच ले लेते हो, उसके ऊपर पत्तियां भी हैं, छोटी स्टेम्स भी हैं, so you can call that a bog. Long cramped bogs shuffling under the roof. तो why जो bog है, the thing that I have just described, so that is shuffling under the roof. Why is it shuffling? Shuffling means changing places. So it is shuffling under the roof because it wants to move out. Agar if it is disengaging its roots and it is trying to move out, so there is going to be movement of the tree as a whole. The next line says, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अभी इसमें एक simile use किया है, like newly discharged patient. So the author is now comparing the tree like a newly discharged patient. Similar to what when a patient is discharged from the hospital, तो that kind of appearance. तो जिस तरीके का पर्सन हु, अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो he will be healthy but not entirely healthy, तो that person will be recovering from an illness. तो जिस तरीके का वो दिखाई दे रहा है, तो probably even the tree was suffering from some kind of illness. Half dazed means some sort of half kind of energy, मतलब the tree is not in its full self. Moving to the clinic doors. So like this, like a patient moves towards the clinic doors, it is trying to move out of the clinic. So in a similar fashion, the tree is also trying to move out of the clinic doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. तो अभी ये जो ऑथर है, तो इन्होंने पर्सनलाइज्ड, मतलब she is speaking from first person's perspective, as if someone is sitting inside the house. So
probably the author is sitting inside, and she is seeing the doors open to the veranda, and she has been writing long letters to someone. She has been writing long letters, but in those letters she is scarcely mentioned, matlab she is hardly mentioning the departure of the forest from the house. So the letters that she has been writing, जैसे ये poem भी है ना, she has written the poem, लेकिन actually who is departing from the forest, she is not actually mentioning that. So similarly, she is writing long letters, but she scarcely mentions the departure of the forest from the house in those letters. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. So the night is fresh. The whole moon shines. So she's trying to describe the scene. कि अभी अभी रात चढ़ी है, like that. The whole moon, so it is a full moon night. So the entire moon is shining in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice in the room. So if a tree is going to be inside the house, तो tree की smell भी आएगी वहां पर. तो leaves, तो obviously you know what is a leaf. Lichen is a you can say a microorganism sort of thing. तो बेसिक लाइफ फॉर्म होता है, जैसे एल्गे फंगस होता है ना, उसी तरीके से लाइकन भी होता है. यू कैन से रिलेटिवली एडवांस देन एल्गे एंड फंगस. लाइकन्स नॉर्मली जो ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस के ऊपर चिपके वगैरह होते हैं. तो गूगल सर्च करना एग्जैक्ट इमेज पता चल जाएगी. बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ होता है वैसे लाइकन. सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ लाइकन्स इन स्पेशली इन रेन फॉरेस्ट. So and the leaves and lichens create a sort of smell. So that smell is still present in the rooms. So it still reaches like a voice into the rooms. So जिस तरीके से, though the forest is moving out of the house, but it still, जैसे if you say something in the house, तो अगर एक part में कुछ कह रहे हो तो the voice is going to travel to the other rooms as well. So though the tree is not present in those rooms, the smell of the leaves and lichen reaches into the rooms like the voice. So that means it is traveling through air into the rooms. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. So she says that her head is full of whispers. Someone is whispering in her head. तो ये एक कहने का भी तरीका हो सकता है that she is thinking something. तो कई बार यूं होता है ना, कहते हैं ऐसे कि कोई आकर आपके कान में बात डाल जाता है. हाँ, someone कोई कहता है कि कोई डेविल डाल जाएगा या कोई एंजल डाल जाता है. हाँ, तो it can be in that way as well, कि उस तरीके से कहने की कोशिश कर रही है ये जो पोएट है. My head is full of whispers. That means probably she is thinking of something. Yeah, she is hearing the whispers of the trees which are trying to move out. इसमें क्या है, clarity नहीं है, तो इसलिए जो words हैं उससे we are trying to decipher the meaning कि ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या mean कर सकता है. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. So now because the the forest is moving out, so because of the movement, the glass of the windows has started to break because the trees are trying to move. The trees are stumbling forward. Stumble means लड़खड़ाकर जिस तरीके से आगे चलते हैं, so that is stumbling. So the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So when the trees are trying to moving out, so the winds are coming to the trees to meet them, to meet the trees, to meet the forest.
तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है, मतलब the poet is trying to personify trees and winds as person, कि जैसे trees move कर रहे हैं बाहर और winds आ रही है उसे मिलने के लिए, कि बहुत टाइम हो गया था trees का और wind मिले नहीं थे. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So look, oak is a tree, काफी घना ट्री होता है, जैसे आपका नीम का पेड़ लगा लो, काफी भरा हुआ होता है ना, तो उस तरीके से ओक ट्री होता है, काफी बड़ा सा होता है. इट इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा ओक. ओक मिल जाएगा खैर आपको हिमालयन रीजन्स में मिल जाएगा, हिमालयन जो स्टेट्स है ना उसमें मिल जाएंगे ओक, कश्मीर वगैरह मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएगा, इस एरिया में नहीं मिलेगा. तो ओक इज अ ट्री. तो इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो जब मिरर टूट जाता है तो द मून इज इन पीसेस, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. क्राउन क्या होता है, जो सर पे पहनते हैं. तो इमेजिन अ ट्री, तो ये ट्री है, अब ट्री के पीछे आपका मून है, तो जब मून की लाइट आ रही होगी तो कुछ कुछ पार्ट से आ रही होगी, सम पार्ट ऑफ द लाइट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय द ट्री, कुछ पार्ट स्टेम्स रोक लेंगी, कुछ पार्ट लीव्स रोक लेंगी. तो द मून इज अपीयरिंग लाइक अ ब्रोकन मिरर. तो इसमें अगेन सिमिली यूज किया हुआ है, तो द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, उसको एग्जैजरेट कर दिया है कि rather than saying that it is appearing like a broken mirror. broken mirror तो सबने देखा होगा, आई एम श्योर. तो उसी तरीके से the moon is appearing, उसको appearance की जगह उन्होंने कह दिया the moon is broken like a mirror. और वो जो broken pieces हैं they flash now in the crown of the tallest oak. crown means the upper part, वो describe करने के लिए the upper part of the tallest oak, जो सबसे ऊंचा oak है, उसके upper part से the pieces are flashing, the pieces of the moon are flashing from the crown of the tallest oak. So this is the literal meaning or the literal explanation of this poem, but it is not the actual meaning. अब hidden meaning देखते हैं कि hidden meaning क्या है इसका. Remember, Adrienne Rich is a feminist and a radical poet. तो इसका कुछ तो hidden meaning है which is related to this. अब क्या है वो देख लेते हैं. Now imagine one thing, अब ट्रीज को रिप्लेस कर देते हैं विमेन से, बिकॉज शी इज अ फेमिनिस्ट, कि अब वो ट्रीज की बात नहीं कर रही है, वो विमेन की बात कर रही हैं. सो लेट मी ट्राई टू रिप्लेस ट्रीज विद विमेन. द विमेन इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो अभी if we are just replacing trees by women, तो हमारी जो पिक्चर है वो अलग नजर आती है, कि the women who have been domesticated, who have been confined to the domestic sphere, कि जिनको घर में बंद करके रखा है, डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटीज के ऊपर रखा हुआ है, who have not been allowed to work out, who have been not allowed to go out and see the world. The entire world is formed of men and women both. लेकिन अगर women नहीं है तो the world is like a tree, like a forest without trees. तो अगर आप एक पार्ट हटा देते हो, अब an important part, if you remove women from the world, it is like you remove trees from the forest. So now the women are trying to move out into the forest. That means the women are trying to move out into the world. Domestic sphere से निकल के बाहर की दुनिया की तरफ आ रही हैं. And all other things are mere description of this. So tonight they are trying to move out into the world, and the world now
by the morning is not going to be empty of trees or not going to be empty of women. Second paragraph का देख लेते हैं. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Now imagine this. A woman is you can say she is imprisoned in the house. बहुत ज्यादा देखो restrictions होती हैं women के ऊपर, girls के ऊपर भी, कि ये चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो. You can wear these kind of clothes, you cannot wear that kind of clothes. You can do these things. These are the things that women can do. These are the things which are not allowed. तो एक तरीके से क्या है कि they have been trapped inside the house with the different restrictions that they are meant to do. कि बच्चे कौन संभालेगा? सिर्फ women. Men are not going to do that. खाना कौन बनाएगा? Only women. मान लो कुछ भी फास्ट करना है तो कौन करेगा? women करेंगे. तो these kind of things which have, because of these kind of things, they have been gripped or they have been entrapped in the house. So now they are trying to disengage themselves from these restrictions. Now the women are trying to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. So when they try to do so, the leaves strain towards the glass, the small twigs stiff with exertion. So this is happening because now the women's personality has grown such that it cannot be confined within the house. कि उनका जो potential है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है. इतनी leaves आ गई हैं, इतने leaves को जो कह सकते हो skills, education, talent, which is exerting now along the windows, along the glass of the windows. जो talent है, जो skills हैं, now they can no more be confined, और वो because of their talent, because of their skills, because of their nature, they are going to go out, they are going to move. और जब ये हो रहा है, जब ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले कुछ चीज थी, and now it is changing, so that is going to lead to shuffling in the house. तो कुछ तो हलचल होगी, लड़ाई वड़ाई होगी या कुछ भी वैसे होगी. But the trees or the women are moving towards moving like newly discharged patients, half dazed, moving to the clearing doors. So if we look at the condition of most women who have faced domestic violence, various crimes inside and outside the house, various kind of discriminations, so they are actually, क्योंकि उनकी personality वैसे ही dent हो जाती है from early childhood. The girl is struggling to survive. कि वो तो शुक्र है कि पैदा होते नहीं मारा है, पैदा होने से पहले नहीं मारा, पैदा हो गए तो इन्फेंटिसाइड नहीं किया, उसके बाद में पढ़ाई के लिए रोका या कुछ भी किया, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो सारी चीजों की वजह से that tends to have an impact on the personality of that girl or that woman. So now they are moving like a newly discharged patient, कि उन्होंने they are trying to heal those wounds, जो भी चोट लगी है, they are trying to heal them, but some part has been healed, but some remains as such. Or now they are moving outside into the forest like a newly discharged patient. तो newly discharged patient है, उसके दिमाग में hope भी होती है और weakness भी होती है, कि hope to move out of the clinics, or weakness from recovery from the fight that she had to endure with the virus or with the diseases that she faced. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. So she's writing a lot of things. The author hai, she's writing a lot of things, but she's not mentioning the departure of the women from the house. कि वो बहुत सारी चीजें लिख रही है, जैसे इस पोएम में भी देखोगे
So she is writing a lot of things, but not mentioning the departure of women from the house, the women moving out of the house. तो दो तरीके से we are interpreting this poem. So rest is similar. The night is fresh. The whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. So just replace the things that a tree, the influence of a tree by the influence of a woman. So जो smell of leaves and lichen है, you can say the personality or the things which a woman adds to the house. So that smell still reaches like a voice into the rooms. So if a woman is a homemaker, she is managing a house. So even though she is moving out, you are going to find the impact of the woman. Even though she is moving out, her impact is still going to reach out into the rooms of the house like a voice. So now my head is full of whispers which tomorrow will be silent. तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं into the mind of the poet. Now these whispers will be silent because what she is trying to accomplish, जो feminist हैं, they are trying to accomplish equality of women. Now what they are trying to accomplish is going to be achieved, and the glass is breaking. That means the change is occurring. The trees are stumbling forward. The women are trying to move forward into the night as the winds rush to meet them. Or the worldly things, जो भी चीजें होती हैं दुनिया में, they try to meet them. And after a long time, women are able to meet the things which are very essential in the outside world. लेकिन इतने time से मिल ही नहीं पाए. The moon is broken like a mirror. Its pieces flashes now in the crown of the tallest